जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी चेनल में। आज आपणे वगर विचारे कार्य करवू जोईए नहीं ते विषे एक वार्ता करशुं। वगर विचारे कोई दिवस कार्य करवू जोईए नहीं। उज्जैन घणा वर्षों पहलानी आ वात छे। उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहतो हतो। ते स्वभावनो शंकाशील अने उतावळियो हतो। नानी नानी वातमां गुस्से थई जाय अने धमाल मचावे। तेनी पत्नी तेने आवुं न करवा माटे घणी वखत समजावे, पण तोय तेना स्वभावमां फरक पड़तो न हतो। एक वखत तेनी पत्नी नदी पर पाणी भरवा गई। ते जता जता तेना पतिने कहेती गई कि आपणुं बाळक पाणामां सूतुं छे, तेने तमे ध्यान राखजो अने हूँ न आवुं त्यां सुधी तमे दूर खसता नहीं। एवुं बन्युं के जेवो ब्राह्मणी गई के तरत ज ब्राह्मणने तेना यजमाननुं एक तेड़ुं आव्युं। यजमानने घेर कोई सारो प्रसंग हतो अने ते निमित्ते तेणे बधा ब्राह्मणोने सीधुं सामान अने दान दक्षिणा लेवा बोलाव्या हता। ब्राह्मणने थयुं के जो हूँ जवामां मोडुं करीश तो मारा दान दक्षिणा पण अन्य ब्राह्मणो लई जशे अने मने कंई नहीं मळे। आजुबाजुमां जोयुं तो तेणे पोतानो पाडेलो नोळियो देखायो। ब्राह्मणना घरनी आजुबाजु घणी वखत साप निकळता हता अने सापना उपद्रवथी बचवा माटे ब्राह्मण ब्राह्मणीए नोळियो पाड्यो हतो। ब्राह्मणे नोळियाने बाळकनी बाजुमां बेसवानुं अने तेनुं बराबर ध्यान राखवानुं कह्युं अने ते यजमानना घरे गयो। ब्राह्मणना गया पछी नोळियाए एक मोटा काळा सापने बाळक तरफ आवतो जोयो। नोळियो तो सापना जन्मजात दुश्मन एटले ए सापना टुकड़े टुकड़ा करी खाई गयो। त्यां तेणे ब्राह्मणने आवता जोयो एटले ते दौड़ीने तेना पगमां आड़ोटवा लाग्यो। ब्राह्मणे जोयुं तो नोळियानुं मोढुं लोहीवाळुं हतुं। तेणे उतावळे एवुं मानी लीधुं के नक्की आ नोळियो मारा बाळकने खाई गयो छे। गुस्से भराईने तेणे पोतानी लाकड़ी वींछी नोळियाने त्याने त्यां मारी नाख्यो अने झटपट अंदर जईने जुए तो बाळक पारणामां घसघसाट ઊંઘી રહ્યું હતું અને પારણાની આસપાસ મરેલા સાપના ટુકડા વેરણ છેરણ પડ્યા હતા। આ જોઈને તેને વિચાર આવ્યો કે તેના વફાદાર પાડેલા નોળિયાએ તો તેના બાળકને મોતના મુખમાંથી ઉગાર્યો હતો અને પોતે તે ભલા પ્રાણીની કોઈ કદર કરવાના બદલે વગર વિચાર્યે તેને જ મારી નાખ્યો હતો। બ્રાહ્મણી પાણી ભરીને પાછી આવી તો તેને પણ પોતાના પાડેલા નોળિયાને મરેલો જોઈ ખૂબ જ દુઃખ થયું। પછી તેણે 2 દિવસના નકોરડા ઉપવાસ કર્યા અને બ્રાહ્મણ પાસેથી એવું પાકું વચન લીધું કે હવે પછી તે ક્યારે પણ ગુસ્સામાં આવી કોઈ વગર વિચાર્યું કામ કદી નહીં કરે। તો દોસ્તો, તમને મારી વાર્તા પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।